Hello guys, Assalamualaikum. Today I will show you the makeup tutorial for beginners. First of all, you have to clean all your face with a makeup remover, तो सारी dirt वगैरह जो आपके pores में होगी वो सब निकल जाएगी. I'm using the Neutrogena's makeup remover. It is a very good thing और मैं काफ़ी satisfied हूँ इस makeup remover से. एंड मेकअप करने से पहले यू हैव टू रिमूव ऑल डर्ट फ्रॉम योर फेस बिकॉज उससे जो है मेकअप का जो है लुक नहीं आता. द नेक्स्ट स्टेप इज़ द मॉइस्चराइज़र. मेकअप से पहले हमेशा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज़ योर स्किन. गर्मी हो या सर्दी हो यू हैव टू यूज़ इट. थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ कर लो अगर आपका ऑयली स्किन है, टेक्सचर है आपकी स्किन का, और अगर आपका ड्राई स्किन है तो वो नॉर्मल अमाउंट में यूज़ करिए. Now third step is to prime your skin, and I'm using the Fit Me primer which is very good for oily skin. Basically primer यूज़ किया जाता है to close your pores. जिनके pores जो हैं वो ज़्यादा open हैं तो उन pores को वो close करता है, और जो dirt है और जो foundation है it cannot affect your skin. This is what the primer do and what's the function of primer, and it is a very beneficial thing और बहुत ही must thing है makeup में. So must carry primer as well in the makeup. The next thing is the eyebrow marker. लोग eyebrow pencil use करते हैं and this is the new thing in Maybelline. You can use it must. बहुत ही आसानी से जो है eyebrows covered हो जाती हैं as you can see, और बहुत मतलब नेचुरल लुक आता है इससे. तो आई जस्ट लाइक दिस मार्कर फ्रॉम Maybelline. द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑल्सो फॉर आईब्रोज एंड आई विल से दैट इट इज़ अ मस्ट थिंग. इट कैन शफल योर आईब्रोज इन अ वेरी सीक्वेंस वे एज यू कैन सी माई आईब्रोज एज वेल. सो दिस इज़ द मस्ट थिंग, यू हैव टू यूज़ इट एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम Maybelline. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ फाउंडेशन फ्रॉम Rimmel, और ये मुझे बहुत अच्छा कवरेज देता है एज़ यू कैन सी. मुझे फिट मी के बाद जो अच्छा फाउंडेशन लगा है वो ये लगा है Rimmel का. इसमें SPF भी है, SPF 15 है आई थिंक सो. सो इट इज़ गुड फॉर स्किन एज वेल. यू कैन यूज़ इट इन द डे लाइट एज वेल, इन द इन द रूटीन एज वेल. आपको जो है मैं रिकमेंड करूँगी कि भाई कभी भी ऑनलाइन आप परचेज़ ना करें बिकॉज़ ऑनलाइन परचेजिंग फाउंडेशन की बहुत ही रिस्की फैक्टर होता है. हमेशा ख़ुद जाएं और अपने स्किन पर यूज़ करें, और हमेशा अपने चीक्स पर और अपने नेक पर हमेशा यूज़ करके देखें. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ द कंसीलर, एंड द कंसीलर इज़ फ्रॉम मिस रोज़. बहुत बेस्ट कवरेज देता है ये. मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. आई रियली रिकमेंड यू गाइज टू यूज़ मिस रोज़ प्रोडक्ट्स एज वेल इन द फाउंडेशन एज वेल. सो हमेशा जो कंसीलर है जब आप नीचे अंडर आई लगाएं तो आई को हमेशा ऊपर रख के लगाएं बिकॉज़ वो फिर जो है वो ज़्यादा जम जाता है नीचे ना, तो एक अजीब सा टेक्सचर देता है. सो ऑलवेज़ यूज़ लाइक दैट. Okay, the next thing is the tint from Body Shop. I really recommend guys this tint because it blends very smoothly. क्योंकि कुछ tints होते हैं वो smoothly blend नहीं होते हैं, but this is the thing I have to recommend you. Body Shop का जो tint है ये it is very natural and blends very smoothly. So I recommend this to you guys to use it at once. Okay, now I'm using Fit Me ka powder, which is very important to know that you have to tap on the skin, not even drop on the skin. The next thing is the highlighter, and I'm putting it on my cheeks and my nose to highlight it, and it is very pigmented, and this is my favorite highlighter. चलो जी, अब difficult moment आ गया है which is liner. और लाइनर मुझसे बहुत मुश्किल से लगता है क्योंकि विंग मुझसे जो है वो नहीं हो पाती है बैलेंस. बट येस, इन दिस ट्यूटोरियल आई डिड दिस एंड आई डिड सो वेल. मुझसे जेल लाइनर यूज़ नहीं होता है, सो आई जस्ट गो फॉर पेन लाइनर्स.
So this is the liner from L'Oreal, and just I loved it because it is really pigmented, as you can see in the video. This mascara is from Oriflame. Oriflame ke mascaras are damn good. They give the volume on your lashes. और मैंने ये मस्कारा सिर्फ इसीलिए लिया है दैट इट गिव्स द वॉल्यूम ऑन माई लैशेस, और मुझे आई लैशेस की ज़रूरत ना पड़े रूटीन में, जो मेरी डेली रूटीन है उसमें, या कहीं जाना पड़े जल्दी जल्दी. सो आई जस्ट यूज़ दिस मस्कारा एंड आई जस्ट गॉट इनफ विद इट. So it is, it is a magical, just got enough with it. So it is, it is a magical thing for me. So I recommend all you guys to please purchase the Oriflame mascara. It is very, very good. This makeup fixture is from Essence and it moisturizes your skin very well. And makeup fix भी बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से settle करता है ये. So I recommend it. And now the transition time. I hope you like this video. Bye bye.